Hello students, welcome back to a new video of our Python series. And in this video, we are going to talk about a program which will help us convert days into years. ठीक है, यूजर जो है डे में इनपुट डालेगा और उसको ईयर में हमें कन्वर्ट कर देना है. So let's start this video. It's actually a very easy like question. Like आपको पता ही होगा कि डे को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. जैसे आपको अगर दे दिया जाए कि 300 days converted to years. So what will you do? So in a year there are 365 days. And we have 300 days. I mean the user has given 300 days. तो आपको क्या करना है? 300 divided by total कितने days होते हैं ईयर में? 365. You just have to divide that. That's it. So it's actually a very easy program. So let's do it. So हमें क्या करना है? यूजर से नंबर ऑफ डेज मंगवाना है. तो बाई इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ डेज, ये एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा हमारा स्क्रीन में. इनपुट फंक्शन क्या करता है? यूजर से वैल्यू मांगता है, लेकिन किस फॉर्मेट में? अब तो आपको ये सब याद हो गया होगा. तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में यूजर से वैल्यू मांगता है. एंड व्हाट आर स्ट्रिंग्स? स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. अभी हम लोग इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं. स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं. क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कैरेक्टर्स के साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, है ना. हमें आगे चल के डिवाइड भी तो करना है. सो कैरेक्टर के साथ कैलकुलेशन कैसे कर दे? तो दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट दीज कैरेक्टर्स इन एनी डिजिटल फॉर्मेट, इन एनी डिजिट. So that's why we are converting it into integer format by using this function, that is int function. Okay, now the user has given the number of days and we have stored it in a variable called days. Now we want to store the answer in a variable, and for that we have created another variable called years. And year कैसे calculate करते हैं? तो जितना भी days हमारा आया है उसको divide कर देना है total number of days in a year, 365. So we have got the answer now. It is stored inside this variable called years. अभी आपको आंसर देखना है ना. तो आंसर देखने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं. ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आप लिखोगे वो क्या हो जाएगा? स्क्रीन में एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा. तो ये एक मैसेज है ताकि स्क्रीन मतलब एक दिखने में सुंदर लगे ये. एंड देन वी हैव द आंसर इनसाइड आवर वेरिएबल, दैट इज ईयर्स. तो जितना भी डेज डाला गया उसको ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे यूजर ने मान लेते 365 डेज ही डाला है. So how to convert? So 365 divided by 365. So that will be how much? 1. So our answer will be years equal to 1. Okay. So I hope this video is clear to you. Now let's practically do it and see if it is working or not. So for that we need to open any IDE. And which IDE are we using? So we are using VS Code. Apart from VS Code, there are multiple IDEs available in the market. आपको जो इच्छा आप use कर सकते हो. You have the option of Notepad++. You have Sublime Text. You have any other. There are multiple like Spider you can use, but we are using VS Code. अभी आपको जो ठीक लगे आप उसको use करो. So let's go to our VS Code. So this is our VS Code. Let's type the code. Okay, so first of all we need the days. So we are storing the days in a variable called d equal to int and input. यूजर को मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, एंटर दी नंबर ऑफ डेज. तो यूजर नंबर ऑफ डेज दे देगा, वो डी में जाके सेव हो जाएगा. नाउ आई वांट द इयर्स टू बी सेव्ड इन द वेरिएबल. सो फॉर दैट आई एम क्रिएटिंग अनदर वेरिएबल y. So y equal to, how to calculate like how to convert days to year. So we have to convert the days. I mean we have to divide the days by 365. So days we have stored in a variable called d. So d divided by 365. Now we have got the answer, but we need to see the answer as well. So for that we need to print it. So print और मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं years equal to and then comma, और कौन से वेरिएबल में हमारा year स्टोर है? So y में है. So y. So we are done with our program. Now what we need to do is we have to run this program. How to do that? Here we are having a this run button, and you click onto this run button. तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ डेज मेरे से मांग रहा है, मैं 365 दे देता हूँ. सो मेरा आंसर 1 आना चाहिए. 365. सी years equal to 1.0. ठीक है. Why it is showing 1.0? Why in decimal? Because this division operator returns the answer in point. So that's why it is showing 1.0. अभी हम लोग इसको फिर से रन करवा लेते हैं and then enter number of days. Let's say 1000. ठीक है, and enter. So 1000 days is equivalent to 2.73972 years. So I guess this video is clear to you and बहुत ज़्यादा difficult इसमें कुछ है नहीं. तो कुछ डाउट है तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स.
And if you like this video, give a like, share it with whoever is in need, and don't forget to subscribe. Okay.